Good afternoon. Are you able to hear me? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Did I complete IUPAC? Yes, ma'am. Last ma'am. to Last was aromatic compounds, the general names that we have written. Names दे दिए थे ना मैंने aromatic के. हाँ मैम, वो last है. Okay, okay. Did you all complete the Terra booklet? Did you all complete the booklet? A little part is left. Yes, ma'am. And why is it remaining? Why have you not completed? Give me the reason. Ma'am, actually this Sunday there is TWT, so I was studying for that. But I did the booklet, only last exercise, and then MS Chauhan is left. Ma'am, What my about- also. What about the others? Completed, okay. Ojas, did you have any doubts? मैम मेरे को था एक दो डाउट पर अभी मैंने टिक मार्क नहीं किया था उसको. पूरा कंप्लीट कर दिया आपने ओम बुकलेट? मैं वो खाली बीच का वो जो एक्सरसाइज 3 का है ना उसमें खाली डायग्राम वाला रह रहा है, वो डायग्राम ड्रॉ करने का है ना उसमें, बाकी तो सारा हो गया. अच्छा. वो जो अपना लास्ट का विंडो Because see, if all of you have completed, then I can take the doubts, ना? सर जब तक सबका होता नहीं है तब तक कैसे मैं बीच बीच में से ले लूं doubts? So when are you when are you going to complete all of you? Next lecture? Ma'am, by tomorrow, yes. Tomorrow is my next class. Yes, ma'am, tomorrow 12 o'clock. And Yes, when is your ma'am, TWT then? This Sunday. Sunday. But then half of the people will be preparing for that. So next week जो पहला lecture होगा, by then at least you all will complete. Yes, ma'am. हाँ हाँ All of you promise me that. 100% Yes, मैम हो जाएगा. ठीक है. So next week का जो मेरा पहला lecture होगा, I'll be taking all your doubts first, IUPAC का. Fine. So now we are Okay, starting ma'am. with GOC. So I'm not burdening you with my homework before your TWT, but next week, first lecture of mine, it should be done, and I'll be taking all your doubts in that class. Okay, ma'am. Fine. Now let me start with general organic chemistry. GOC is nothing but general organic chemistry, the most important part of entire organic. All the basic concepts you'll be learning here. If you understand GOC, organic is very easy. If you don't understand GOC, you will have to leave organic. कुछ भी नहीं समझेगा. Okay. So please concentrate on this topic, on this chapter. Try avoiding, please avoid remaining absent for these lectures. Okay. और अगर in case कुछ ऐसा emergency आ रहा है, you're not able to attend the lecture, immediately on that same day, you just see the recording for the lecture. Okay. Is that fine? Yes, ma'am. क्योंकि GOC नहीं समझेगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, आगे ऑर्गेनिक छोड़ना पड़ता है. एंड ऑर्गेनिक इज एटलीस्ट मिनिमम 33 to 35% के बीच में आता है केमिस्ट्री पेपर में. सो इट इज 1/3, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ केमिस्ट्री. इनफैक्ट मोर देन 1/3, 35%. More than 1/3 of chemistry is organic. Okay, so you have to understand GOC. You don't have any options. Okay, this is general organic chemistry. NCERT mein this is given as the chapter name says some basic concepts of chemistry. Okay, now under general organic chemistry, what I will be doing in the class
in all these lectures. I'm just writing down that. Just copy this and then we can start. So the first part I'll be doing here is types of electronic displacements. Under this, I'll be doing inductive effect, electromeric effect, resonance or mesomeric effect, and then you have hyperconjugation, also known as Baker-Nathan effect. Then I'll be doing types of bond fission. Under this, I'll be doing homolytic bond fission, and heterolytic bond. ये जो TWT है उसमें IUPAC है? No, ma'am. Geshe State. Okay, okay. मैम वो IUPAC शायद 26 तारीख को है। अच्छा अच्छा, तो उसके पहले याद दिलाना, एक वीक पहले. Then I'll give you एक वीक पहले नहीं, उसी वीक में you remind me. I'll give you a paper to solve before that. Fine. मैम वो रिएक्टिव ओके के बाद क्या लिखा है? टाइप्स ऑफ रिएक्टिव. Intermediates ना, ये वाला ना, यस मैम. intermediates ना. Under this you have carbocation, carbanion, carbon free radicals. Then you have carbene. मैम ये बड़ा चैप्टर है क्या? कितना लेक्चर लगेगा इसके लिए? 6-7 लेक्चर लगेगा. ओके Nitrene and benzene. डन मैम।
Finished? Yes, No, ma'am. ma'am. 1 minus 1. मैम अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ सिलेबस कम ज्यादा हुआ है क्या? नहीं, क्यों कम ज्यादा होगा? मतलब कुछ अभी अपडेट आया था ना, न्यू सिलेबस का कुछ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हो गया ये लिख के? Then the last part I'll be doing is types of reagents. Under this, I'll be doing electrophiles, nucleophiles, and amphiphils. इस मतलब ये जो लिखा है उतना हम लोग को करना है ना? हाँ, ये सारा कवर्ड है इस चैप्टर में, जीओसी। लिख लिया? यस मैम। Under resonance, I'll be also covering aromaticity. Here. Aromaticity I'll be covering with resonance. Fine. So I'll start with the first part. I'll start on the next slide only. Types of electronic displacements. What do you understand by the term displacement of electrons? तो मैम हेलो हाँ, क्या बोल रहे हो ओम? मैम, वो एक बार प्लीज करो ना, वो क्या लिखा था आपने एंड करके सी में रीज? Aromaticity. अच्छा, ये वाला हाँ अच्छा एरो। aromaticity. हाँ, ओके ओके aromaticity, हो गया। done. हाँ हाँ मैम, हो गया सर। Okay. What do you mean by the term electronic displacements? Transfer of electron from The one movement place of to electrons. another. Basically, the movement of electrons. Now, under this, the first type I'm doing is inductive effect. Write down about this, then I will explain what this is. The displacement of a sigma bond. The displacement of a sigma bond towards the displacement of a sigma bond towards the more electronegative atom,
the displacement of a sigma bond towards the more electronegative atom in a molecule. मैम सॉरी मैम, वो वापिस एक बार बोलो ना थोड़ा. The displacement of a sigma bond towards the more electronegative atom in a molecule is known as inductive effect. I repeat, the displacement of a sigma bond towards the more electronegative atom in a molecule is known as inductive effect. It is a permanent effect. It is a permanent effect and results in partial polarization. It is a permanent effect and results in partial polarization of a compound. Partial Polarization of a compound. Partial polarization of a compound. Done, ma'am. Okay. So now just let me explain what this is. Give me the name of this compound. Propane. 1-chloropropane, correct? Ma'am. This is 1-chloropropane. Do you agree? Yes, ma'am. Yes. Now in 1-chloropropane, you have the sigma bond present between carbon and chlorine. So can I say there's a difference of electronegativity between these two atoms? Yes. Yes, ma'am. Which atom is more electronegative? CN. Chlorine or carbon? Yes, chlorine is more electronegative. How do you define the term electronegativity? How easily does it accept an electron? No, that is electron affinity. Electronegativity is the ability of an atom to attract the bonded pair of electron towards itself. I repeat, electronegativity is the ability of an atom to attract the bonded pair of electron towards itself. So this is the bonded pair of electron, am I right? The sigma bond. Yes. Chlorine is more electronegative than carbon. That means its ability to attract the bonded pair of electron towards itself is higher than that of carbon. So this bonded pair of electrons, the sigma electrons, will drift more closer to the nucleus of chlorine, because nucleus of chlorine will pull this electron pair more as compared to the nucleus of carbon. So there's a slight drift in the electrons of the sigma bond towards more, it goes more towards the nucleus of chlorine. Because of that, this chlorine develops a partial negative charge and the carbon in turn will develop a partial positive charge. Did you understand this part? मिस रिपीट करो तो आपका बीच में वॉइस वो कट हो गया था. My voice isn't clear? No, ma'am, it's clear for me. Okay. I have a sigma bond here present between carbon and chlorine, of which is the atom which is more electronegative here? Cl. So can I say chlorine electronegative hai, so it will start pulling the sigma bond towards itself? So these Yes, sigma ma'am. bond, these sigma electrons move more closer to the nucleus of chlorine as compared to carbon. They are more closer to the nucleus of chlorine as compared to carbon. Because of that, chlorine develops a partial negative charge and carbon develops a partial positive charge. Why am I saying partial negative and partial positive?
and not complete negative and complete The positive? electron does not completely transfer, it just shifts its position towards the right a Very little good. bit. Yes. Here the electron pair is not completely shifting onto the chlorine atom. There is a partial drift of electrons here, more closer to the nucleus of chlorine. And therefore, there is also a partial negative charge here and not a complete negative charge. Had the electron pair completely shifted to chlorine atom, then chlorine would develop a negative charge. Am I right? Yes, ma'am. So there is a partial drift here, and therefore chlorine develops a partial negative charge and carbon develops a partial positive charge. Now this carbon in turn becomes electron deficient. Am I right? So this carbon becoming electron deficient because of the positive charge, it will try to pull electrons. Can carbon pull electrons from chlorine? No, because it's less No. electronegative. So what will the carbon do? The carbon will pull sigma electrons from the next carbon. So here also there will be a small drift in the electronic position. The electron will get more closer to the nucleus of this carbon as compared to the second carbon here. Are you understanding? Yes, ma'am. Yes, But this drift is going to be smaller as compared to this drift. Why is this drift going to be smaller? Or why is this displacement smaller? Because which is the atom which is withdrawing here? कार्बन, इसलिए कम है हाँ, और जिसका क्लोरीन का कार्बन का इलेक्ट्रॉन withdrawing power is less than the withdrawing power of less. chlorine. Do you agree? Yes. So therefore the drift also, the displacement will be small. Because of that, this carbon also in turn will develop a partial positive charge. But the magnitude of partial positive charge here will be less than the magnitude of partial positive charge here. The reason being, the displacement of this electron is less as compared to the displacement of this electron pair. Are you understanding? Yes, So, ma'am, there's a double symbol over the second carbon. Double delta plus. Okay. less, that's one. Acha. This carbon also being electron deficient will now pull the electrons from the next carbon, the third carbon. But here the drift or the displacement will be still more smaller as compared to the drift here. And why is it Yes, that ma'am. happening? मैम ये CH3 से CH2 जा रहा है. नहीं. इस कार्बन पे चार्ज क्या है? डेल्टा प्लस. और इस कार्बन पे चार्ज क्या है? डबल delta plus. मतलब और इसलिए, स्मॉलर हाँ, और स्मॉलर हो गया ये. Yes, ma'am. Then the और third अगर one will have और स्मॉलर हो गया तो triple इसका delta plus. विड्रॉइंग पावर कम हो जाएगा. डू यू एग्री? हाँ मैम. तो ये ma'am. ड्रिफ्ट डिस्प्लेसमेंट भी कम हो जाएगा इसमें. तो इस इसलिए कार्बन पे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कम हो गया तो इसका जो चार्ज है वो और कम हो जाएगा. और कम हो जाएगी. Did you understand ma'am. this now? Yes, Yes, ma'am. ma'am. So this displacement of sigma electrons towards the more electronegative atom in a molecule is known as inductive effect. Which type of electrons are drifting or displaced? Sigma electrons, am I right? Yes, So the ma'am. displacement of sigma electrons is inductive effect. It is a permanent effect. Permanent मतलब molecule में delta plus delta minus तो रहेगा ही. And it causes partial polarization of the molecule. Is there complete polarity or partial polarity developed on the molecule? There is No delta plus partial. delta minus, no? Or is it complete plus or Complete. complete minus? Only delta partial. That means partial polarity is developed here. Did you understand this? Did you Please understand the repeat करो sentences तो. which I gave you for inductive effect? प्लीज एक बार रिपीट करो तो. क्या बोला? पार्शियल. ये मॉलिक्यूल में पार्शियल चार्जेस डेवलप हुए हैं ना, कि कंप्लीट हाँ. कंप्लीट प्लस और कंप्लीट माइनस आया है. पार्शियल डेवलप हुए हैं. हाँ, तो पार्शियल पोलैरिटी आया है ना. हाँ मैम, समझे. Now there are two types of inductive effect. You have negative inductive effect or minus I effect, which is nothing but electron withdrawing effect. And you have plus I effect, which is electron donating effect.
Okay, now let me explain what is minus I first. Minus I or negative inductive effect is electron withdrawing effect. What is chlorine doing here? Chlorine atom. Is it withdrawing electrons or donating electrons? Withdraw. So chlorine Withdrawing. here shows minus I effect. What is the carbon chain doing here? Is it giving Donating. electrons to chlorine or withdrawing from chlorine? Both. Donating, giving. So Donating. this shows plus I effect. In other words, the alkyl group here shows plus I effect and the chlorine atom shows minus I effect. तो इसका withdrawing effect है और इसका donating effect है. ये समझ में आ रहा है? हाँ मैम. Okay. Can I say all the functional groups when bonded to the carbon chain will show minus I effect? Because functional groups में electronegative atoms होते हैं. Am I right? हाँ. तो electronegative atoms carbon chain से withdraw करेंगे या देंगे उसको? Withdraw करेंगे. Give. Withdraw करेंगे ना? हाँ मैम. 1 minute, I think office से call है. Just 1 minute. Okay. So chlorine here is showing minus I effect and the alkyl group shows plus I effect. Any functional group when bonded to a carbon chain will show minus I effect. Do you agree? Yes. Because all the functional groups have either oxygen, nitrogen, sulfur, halogen, and so on, correct? And all these are more electronegative than carbon. So all the functional Yes. groups show minus I effect. Now I'm giving you the decreasing order of minus I effect. Just write down this. Decreasing Okay, minus I effect. इसका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है NR3 प्लस. Ma'am, is it minus NR3 or plus NR3? ये प्लस है. So then the minus sign ahead of it. सब ऊपर मैंने प्लस चार्जेस दिए हैं. This order you will have to remember. इसे पूरा ना. हाँ, ये ये बाय पूरा जो क्लब ऑर्डर आएगा. देगा. मैम कभी कभी तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि 2-3 ऐसा नाम दे दिया, उसमें बोला है कि भाई माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर बताओ, तो ऐसा क्वेश्चन भी आता है. हाँ, ऐसे पूछ सकते हैं. ये प्लस आई का हम पीछे कर लेंगे. पहले ये माइनस आई का ऑर्डर I'll just complete. ओके मैम. H is हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का वैसे 0 लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट. हाइड्रोजन का 0 लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट.
ओके मैम, ये कितने तक है? बस हो गया। हाँ मैम, मेरा भी हो गया लिख के। मैं और इसका सारे चार्ज पॉजिटिव ही डाल दूं ना? यहाँ पर Positive प्लस है, only यहाँ still पर NH3. खाली NH3 तक प्लस है, बाकी तो प्लस नहीं है कहीं पर भी। ओके मैम। R means alkyl group. Okay, R is an alkyl group. And what Plus is sign it? is there, that is why they are more electron withdrawing. जहां जहां plus sign है, they are going to be more electron withdrawing because of the positive charge. मैम वो एरो दिया उसको क्या बोलते हैं बीच में, बॉन्ड के बीच में? कौन सा एरो? अपना CH2 और Cl के कहाँ है? बीच में ना, ऊपर एकदम ऊपर, ये डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस वाला एग्जाम्पल। हाँ मैम, ये इसके बीच में, हाँ ये तो खाली हाँ डिस्प्लेसमेंट बता रहा है इलेक्ट्रॉन्स। हाँ हाँ ओके। मतलब ये इलेक्ट्रॉन थोड़े डिस्प्लेस हो रहे हैं इस डायरेक्शन में, समझा? हाँ मैम। मैम ये चैप्टर में न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन शायद ही आएंगे ना, या फिर नहीं आएंगे? नहीं, न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे। ओके ओके Ma'am, done. इंटीजर बेस्ड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ये हो गया लिख के? हाँ मैम। Now, like you have an order for minus I, similarly you have an order for I. plus I effect. Plus I effect is electron donating effect. Now I'm giving you the decreasing order of plus I effect. यहाँ नेगेटिव आयंस आएंगे। हाँ मैम, मेरे को वही लगा है, माइनस साइन है ऊपर। What is T, D and H? इनका मीन्स आई डोंट नो, मैं ये वही सारे पूछने वाला था। आइसोटोप्स होते हैं। You know what are isotopes, no? Tritium, हाँ मैम। deuterium, hydrogen. Isotopes पता है ना? Yes, हाँ ma'am. These are three isotopes of hydrogen. Hydrogen के तीनों isotopes है. This is tritium, deuterium and protium. ओके मैम। Tritium, deuterium and protium. दूसरे R is the alkyl group. Ma'am, बस इतने ही हैं. हाँ, प्लस आई में इतनी है। तो हो गया मैम। अभी alkyl group जरा I'll just tell more for this. If I take this alkyl group, can I say this is ethyl group? और ये कौन सा ग्रुप है?
Propyl group है, am I right? Between Yes, between ma'am. ethyl and propyl, which should show more plus I effect. अगर दोनों को यहाँ पे क्लोरीन बॉन्डेड है, से क्लोरीन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज्यादा होगा या यहाँ पे ज्यादा? प्रोपाइल हाँ, रीजन 3 है ना, 3 बार डोनेट, 3 लोग 3 ये कार्बन डोनेट कार्बन करें। ज्यादा दे पाएगा क्योंकि उसको पीछे से मिल रहे हैं, हाँ मैम, और इसलिए। ये भी इधर थोड़ा ज्यादा ड्रिफ्ट कर पाएगा क्योंकि उसको पीछे से मिल रहे हैं इलेक्ट्रॉन। यस मैम। हाँ, सो लार्जर द अल्काइल ग्रुप, मोर इज द प्लस आई इफेक्ट. Write it down. This is not ketone, this is carboxylate ion. Carboxylate ion negatively charged है ये. This is not ketone. मैम क्या बोला? लार्जर द आयन, Larger the alkyl group, more group. is the plus I. Larger the alkyl group, more is the plus I effect. Larger the alkyl group, more is the plus I effect. Previous page is this. वैसे हम इंडक्टिव इफेक्ट 3 कार्बन के बाद देखते नहीं है क्योंकि 3 कार्बन के बाद ड्रिफ्ट इतना छोटा हो जाता है कि नेग्लिजिबल हो जाता है. ओके, सो इंडक्टिव इफेक्ट हम सिर्फ 3 कार्बन तक कंसीडर करते हैं. ओके मैम. Can I proceed? यस मैम. Okay. So more the or larger the alkyl group, more will be the plus I effect. Now what if I take something like this? How many carbon atoms here? 4. 4 carbon in the alkyl group. Here also total carbon are 4 only. Yes मैम. Here also total carbon are 4. And here also the alkyl group has total 4 carbon. This is N-butyl group. This is isobutyl. This is sec-butyl. And this is tertiary butyl. सारे butyl groups ही हैं. Will their plus I effect be same? No. Which will show maximum plus I effect? And butyl. Tertiary butyl. Reason you have to give me. Sorry, N-butyl because it has more carbon atoms behind to give the electron. यस मैम. और 3 के बाद एक तो नेग्लेक्ट कर देंगे. 3 के बाद निग्लेक्ट करते हैं ना. इसमें तो ये कार्बन पे डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े हुए हैं देने के लिए इसको? 3. इसमें 3 है. Can I say this carbon will get electron from all the 3 sides? So its ability to donate electrons will be maximum. हाँ मैम. The carbon is Yeah. getting electrons. All the 3 carbon atoms are directly pushing their own electrons to their central carbon, which will be able to give the electron more. So here the displacement will be maximum displacement hoga. More the branching, more is the plus I effect. More the branching, more is the plus I effect. More the Okay. branching, more will be the plus I effect. Yes ma'am. So accordingly, could you give me the arrangement here? Greatest is tertiary butyl, then Increasing order. sec-butyl. Maximum plus I किसमें होगा?
4 टर्शरी ब्यूटाइल होगा उसके बाद 3 फिर 3 उसके बाद 2 उसके बाद 3, 2, 1. yes, so this is a decreasing plus sign. More the branching, more will be the plus I effect. Finish writing this? मैम एक मिनट एग्जांपल लिख रहा हूँ. Done, ma'am. All of you completed? yes Okay. Now, why do we study inductive effects? In other words, now we will see the applications of inductive effects. So write down the next as applications of inductive effect. First one. To compare acidic strength. What do you understand by the term acid? Acid क्या होता है? Low pH. No, if I'm asking you whether this compound is acidic, how will you tell me Higher what is exactly an oxidation. acid? How do you define the term an acid? I can say this compound is an acid only if I can say that it can is HCl an acid? Yes. Why is Yes. it an acid? Why is HCl an acid? Because it can It can do reduce. what? It can reduce other substances. Yes, that is the correct answer. An acid can give H plus ions. A substance which can give H plus ions is called as an acid. Na, itna simple to tha ye definition. Am I right? Yes, ma'am. A substance can be called as an acid only if it dissociates to give H plus ions. I'm talking about a Bronsted acid here. Do you know the definitions for acids? Different scientists लोगों ने different definitions One of दिए. them is proton donor. Bronsted acid is nothing but a proton donor. Here I'm talking about a Bronsted acid. That means a proton donor. A substance which dissociates to give H plus ions is called as an acid. Will any compound which has hydrogen atom behave as an acid? No. नहीं. HCl is an acid, I know that. Am I right? Yes, ma'am. Yes. But is methane an acid? No. Though it has 4 hydrogen, but it doesn't give even 1. Am I right? Yes, ma'am. I'm So बहुत what selfish. makes HCl an acid and what is not there in methane that it cannot act as an acid?
HCl में ऐसा क्या है जो वो Electronegativity dissociate हो सकता difference. है to give H plus ions? Electronegativity difference is greater. Very good. Yes. I know that HCl is an acid. The reason being because in HCl there is an electron withdrawing atom. That electron withdrawing atom will pull away electrons. The displacement of electron is going to be there here. Towards which atom? The displacement will take place towards chlorine atom. Am I right? Because of that, the H can come out from the molecule as H plus ions. That makes HCl an acid. In methane, can I say there is no such displacement of sigma bond towards the carbon here? Because electronegativity difference between carbon and hydrogen is not very large. So the bond here is more covalent rather than ionic. Rather than, you have done different types of bonds, am I right? You have done ionic bonds. Under covalent, you have done non-polar and polar covalent bonds, correct? Yes. This is a polar covalent bond. Do you agree? Ma'am. But this is non-polar, no? इसका डाइपोल पूरा जीरो आता है कि Yes, जीरो ma'am, आता है zero. ना? Zero. नॉन पोलर है ये बॉन्ड में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है दोनों एटम्स के बीच में सो द इलेक्ट्रॉन पेयर इज नॉट गोइंग टू ड्रिफ्ट टुवर्ड्स कार्बन so displacement nahi hai, so this H will not come out from the molecule as H plus. That is why HCl is an acid but methane is not an acid. हाँ मैम समझा. Okay, तो अगर हाइड्रोजन पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम है then only that molecule can dissociate to give you H plus ions, otherwise not. Okay ma'am. Fine. Now let me take this compound. What is the name of this compound? Ethanoic acid, commonly known as acetic acid. इसका common name acetic acid है. How many hydrogen are there in all in the molecule? 1. Total hydrogen in the Sorry, molecule. 4. Okay, there are 4 hydrogen atoms. Out of that, which is the acidic hydrogen? Only 1. The attached to oxygen. Yes, the one which is attached to oxygen is the acidic hydrogen, not the one which is attached to carbon. Do you agree? Yes ma'am. Yes, Again, ma'am. the reason for that being what? Oxygen is electron withdrawing. Am I right? So it will pull the electrons from hydrogen, and therefore this H will be able to come out as H plus ions, giving you CH3COO minus and H plus. Did you understand what I said? Yes, ma'am. Though there are 4 hydrogen in the molecule, the acidic hydrogen is the one which is bonded to oxygen and not the one which are bonded to carbon. Is that part clear? Yes ma'am. Okay. Now, if I ask you to compare between acetic acid and chloroacetic acid, which should be a stronger acid and why? इसमें भी हाइड्रोजन तो ये वाला ही एसिडिक है. क्या So this बोला will मैम? dissociate to give you the chloroacetate ion and H plus. Now the question is, which will dissociate more to give more number of H plus ions? In other words, which is a stronger acid among the two? Let me help you comparing. Okay. Chloroacetic acid. And what is the reason? A greater electronegativity difference. Yes ma'am. Cl बोलाइए. Now let me explain. Can I say this oxygen has high electronegativity, so it is going to withdraw electrons from hydrogen? Yes. Oxygen can also withdraw from this side. हाँ मैम. दोनों और साइड. ये साइड में कार्बन है, अल्काइल ग्रुप है. अल्काइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट आता है? प्लस आई इफेक्ट आता है. Am I right? Alkyl group show what effect? Positive effect. तो पॉजिटिव इफेक्ट में मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स अपने इसकी तरफ देगा, ऑक्सीजन की तरफ. डू यू एग्री? हाँ मैम. So will the ability of oxygen to withdraw electrons from the hydrogen be very high here? Because oxygen is getting electrons from this side also. So can I say यहाँ से उसको electrons लेने का capability थोड़ा reduce हो जाएगा? हाँ बराबर. अब यहाँ पर increase देखो. होगा या decrease होगा? Decrease होगा ना, इस तरफ से decrease हो जाएगा ना. और ये साइड से increase. देखो, oxygen is getting electrons from this side also. Am I right? Yes. So its ability to accept electrons from hydrogen becomes slightly less here, ना? Yeah. अगर यहाँ पर हम देखते हैं
यहाँ पर कौन सा एटम बॉन्डेड है कार्बन को? तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा. So will the carbon be able to give electrons this much to this side to oxygen? No. So can I Less say this oxygen will dissociation. then require more electrons from hydrogen? Yes, ma'am. So this H will come out more easily as H plus ions. हाँ Yes. That is why chloroacetic acid is a stronger acid than acetic acid. हाँ मैम. समझा के फिर से रिपीट करो. फिर से रिपीट करो तो. Okay, okay. Now oxygen wants electrons. उसको यहाँ से तो वो ले रहा है, बट यहाँ से भी मिल रहे हैं उसको, कार्बन से भी मिल रहे हैं, क्योंकि कार्बन चेन है ना, यहाँ पर अल्काइल ग्रुप है. Am I right? ये समझ गया. अल्काइल ग्रुप भी ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, तो उसका विड्रॉइंग पावर हाइड्रोजन से ज्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको इस तरफ से भी मिल रहे हैं. Am I right? अब इस कंपाउंड में ऑक्सीजन को इस साइड से इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे ज्यादा. क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि वो एक Cl के बाजू जाए. Chlorine is withdrawing from carbon. So will carbon be able to give its electrons to oxygen? No. So oxygen will demand electrons then more from hydrogen, no? हाँ. So this H will easily come out as H plus ions. Yes, ma'am. Okay. What about if I introduce one more chlorine here? This is dichloroacetic acid. Can I say अब ये दोनों क्लोरीन विड्रॉ करेंगे इस कार्बन से? हाँ. More stronger acid. Yes. तो यहाँ कार्बन पे डेल्टा प्लस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा because of the two chlorine. Do you agree? Yes, Yes, ma'am. ma'am. So will this carbon give electrons to oxygen from this side? Negligible. हाँ. So that attraction for electrons from hydrogen will become more. हाँ मैम. तो ये H plus और जल्दी निकलेगा उसमें से. Yes, that's why That will more. make dichloroacetic acid a stronger acid than monochloroacetic acid. And then trichloro will Do be you agree? greatest. Can I say trichloro here will be the greatest? Trichloroacetic acid will be the strongest acid amongst the three. In fact, Yes. amongst all these. In other words, more the minus I effect, stronger is an acid. I repeat, more the minus I effect, stronger is an acid. ये लिखना ये सेंटेंस और उसको एक बॉक्स में डाल के उसको 5 स्टार भी दे देना. That means it is very very important what I have said. Okay, More ma'am. the minus I effect, stronger is an acid. मैम तो फिर बेसिक का उल्टा हो जाएगा, वो कम हो हाँ, जाएगा. बेसिक का अभी नेक्स्ट एप्लीकेशन आएगा, वो बाद में कराते हैं. ओके मैम, तो फिर वो कम हो जाएगा मतलब. More the minus I effect, stronger will be the acid. Stronger will be the acidic acid, no? Yes. More the minus I effect, stronger is the acid, or higher is the acidic strength within it. मैम ये एग्जांपल कॉपी कर ले. हाँ, ये करना है. Did you copy this? नो मैम, थोड़ा बाकी है, 1-2 लाइन.
हो गया कि नहीं? Yes, ma'am. हाँ मैम, Okay. हो Now, गया मैम. acidic strength is measured in terms of a constant called as Ka. Ka is nothing but dissociation constant of an acid. Have you heard about this? Ma'am, I don't heard about it. Dissociation constant means जितना ज्यादा dissociate होगा acid, जितना ज्यादा dissociate होगा मतलब जितना ये reaction right hand side में जाएगा, that will have a larger value of Ka. So amongst these two, which is a stronger acid? Cl वाला. Second one, So the this below will give you one. large concentration of H plus ions as compared to this one. Yes ma'am. So इसका Ka will be larger because ये ज्यादा dissociate होगा, समझा? हाँ मैम. Dissociation मतलब ये ions ज्यादा बनेंगे ना? So Ka measures acidic strength. K is a constant which measures acidic strength, and K is directly proportional to acidic strength. Larger the value of Ka, stronger is the acid, and vice versa. Means stronger the acid, larger will be the value of Ka. So amongst these four which I have given here, tell me the one having the highest value of Ka. Tetra. हाँ, चार. Trichloro. Yes, this will have the largest value of Ka. And can I say this will have the smallest value of Ka? Yes ma'am. Okay. Are you all understanding? Yes I'm ma'am. numbering them so that things become easy. So decreasing Ka अगर पूछा है तो क्या आंसर होगा? 4, 3, 2, 1. Yes. Now, like you have a constant Ka, you also have another constant pKa. pKa is nothing but minus log of Ka. If a substance has larger Ka, can I say its pKa will be smaller because of the negative sign here? Yes. देखो, pKa is minus log Ka. So if Ka is large, pKa will be small because of the negative sign here. Am I right? Yes, ma'am. Yes ma'am. So I can say pKa is inversely proportional to acidic strength. Okay, pKa is inversely proportional to acidic strength. Ma'am, what is the use of Ka and pKa? I mean, where do we actually use them? We'll be using this when means they can Some. just ask you okay, which of the following ionic equilibrium करके एक chapter है उसमें ये maximum utilize होगा. Okay. Okay, ma'am. From these values you can actually calculate the pH and all that solution के. Oh. Okay ma'am. So you can write down pKa is inversely proportional to acidic strength. Stronger the acid, smaller will be the value of pKa. So amongst these four, could you tell me which will have the highest pKa? 1. 1. Yes, and lowest pKa will be for the fourth one. 4. Decreasing pKa. 1. 1, 2, 3, 4. Correct? Yes. Yes ma'am. If you want, you can write that also. Did you finish writing this? Yes ma'am.
I've given you 3 acids here. This is propanoic acid, 2 chloropropanoic acid and 3 chloropropanoic acid. Stronger acid कौन सा होगा इसमें? In fact, strongest acid. B. बी सबसे पहले 2 पे आएगा इसलिए, उसके बाद सी, उसके बाद ए. Very good. Can I say B and C will be stronger acids than A because B and C have minus I effect of chlorine? Yes, ma'am. A doesn't have any minus I effect. B and C has minus I effect, so B and C are going to be stronger acids than A. Between B and C, B is stronger than C because B में chlorine नजदीक है इस hydrogen से. Am I right? हाँ और मैम. नजदीक हुआ तो inductive effect ज्यादा होगा because inductive effect decreases with distance. Inductive effect decreases with distance. Here chlorine is closer to this hydrogen, so its inductive effect will be more. More minus I, more will be the acidic strength. That makes B a stronger acid than C, and C is definitely, both these are stronger acids than A. Is this मैम, part understood? हाँ मैम एक खाली ऐड करता हूँ मैम. अगर Cl जो है ना सेकंड पे आपने सब्स्टिट्यूएंट लिया है, उसके बदले पेरेंट लिया होता और इधर रिंग होता, मतलब रिंग क्या सब्स्टिट्यूएंट होता, तो वो कौन सा बड़ा होता, बी या सी बड़ा होता? क्योंकि आपने नहीं। पहले बोला ना जितना ज्यादा वो रहेगा रिंग वो फिर से बोलो क्या बोल रहे हो? अगर बी में जो आपने सेकंड अपना CH लिया ना, CH उसके नीचे Cl लिया बराबर सब्स्टिट्यूएंट में, हाँ यहाँ पर हाँ उसके बदले अगर पेरेंट होता और Cl तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट ही हो सकता है, पैरेंट कब हो सकता है? You're जैसे saying ये if ग्रुप there's a नहीं होना चाहिए. substituent chain instead of the chlorine, then will it be a stronger acid or a weaker acid? If it is on a substituent chain, you are saying. Instead of the chlorine, if you have a substituent, say methyl group, or something like that. You're saying this one. I guess that's what he's saying. हाँ This will मैम. be the weakest acid amongst all, ना? Which have you? ये तो weakest acid होगा, क्योंकि इसका प्लस इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा ना. ये ब्रांचिंग भी है ना इसमें. ब्रांचिंग की वजह से प्लस इफेक्ट बढ़ जाएगा, और प्लस इफेक्ट बढ़ गया तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? Decrease. हाँ. So if I number this A, B, C, D, D is going to be the weakest acid. Got it? Yes मैम. Did you all finish? Yes मैम. So now I'll give you one question, you'll be able to answer. Let me see.
Give me the decreasing order of acidic strength here. सबसे पहले तो 1 आएगा, उसके बाद 2 1, 2, 5, 3, 4. और उसके बाद 3 और उसके बाद 4. Very good. Did all of you understand this order? यस मैम. All of you understood this? Yes, ma'am. Yes, It is miss. based on the distance of chlorine from the acidic hydrogen, correct? So this is the correct order. अगर डिक्रीजिंग Ka पूछा है तो वो भी यही ऑर्डर होगा, करेक्ट? ये हाँ, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, ये डिक्रीजिंग Ka का ऑर्डर है, यस मैम. अगर pKa होता तो उल्टा हो जाता. Pka 4 पूछा तो उल्टा वो होगा, 2 1 ऐसा. समझा? 4 will be the one having highest pK and 1 will be the one have first वाला will have the lowest pK. यस मैम. All of you have understood till here? कुछ भी डाउट है यहाँ तक? नो मैम, आई डोंट फाइंड इट आउट. Ma'am, it should be 1, 2, 3, 5, 4, right? Anybody else? हाँ बोलो. 1, 2, 3, 5, 4. That's what I got. 1 2 3, 5, 4. 3 को आपने 5 के पहले डाल दिया. अब 3 में देखो, 3 में एक क्लोरीन सेकंड यहाँ पर है और दूसरा दूर है ना. एक Yes, सेकंड, ma'am. एक सेकंड, एक सेकंड. हाँ, आई थिंक मैम शायद 3 पहले आएगा. 1 minute. 3 will be more. हाँ, 3 will be more than 5. 3 पहले Yes. आएगा. हाँ, what you said is correct. 3 is more than 5. Why is 3 more than 5? क्योंकि this chlorine is very close ना. हाँ मैम, इसलिए वो 3 पहले आएगा. दूर हो गया तो उसका इफेक्ट कम हो जाता है, am I right? ये वाला क्लोरीन बहुत नजदीक है तो उसका इफेक्ट भी ज्यादा आएगा इसके ऊपर, चाहे वो एक क्लोरीन है. So 3 is going to be more than 5. Yes, yes. Okay. This is correct. So it is 1 2 3 5 4. I didn't even check. Okay, fine. So now, what if I ask you something like this? मैम 1 मिनट पीछे करो तो 1 मिनट खाली. एक सेकंड. हो गया? हाँ मैम. Okay. This is methanoic acid, ethanoic acid, propanoic acid, butanoic acid. इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बताओ कौन सा है? ये भी हो सकता है. Ethanoic acid. Can I say A, B, C, D? हाँ मैम, क्योंकि ये सबसे पहले है, सबसे ज्यादा पास इसमें है, there is no इसलिए. प्लस आई, क्योंकि हाइड्रोजन का हम इंडक्टिव इफेक्ट 0 लेते हैं, करेक्ट? हाँ मैम. इसमें प्लस आई आ गया, और प्लस आई आ गया तो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या हो जाएगा? Decrease. थोड़ा हाँ, कम हो प्लस जाए. आई इफेक्ट will decrease the acidic strength. माइनस आई इफेक्ट increases the acidic strength. तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा यहाँ पर होगा क्योंकि लार्जर अल्काइल ग्रुप है. So this Yes, will be ma'am. the weakest acid.
इनमें बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ। One two four One. three 1 2 four three. yes. Can I say more the branching, more will be the plus high effect? यस, सबसे ज्यादा ब्रांचिंग 3 में है। इसमें ब्रांचिंग सबसे ज्यादा है तो मैक्सिमम प्लस आई है, और मैक्सिमम प्लस आई हो गया तो एसिड स्ट्रेंथ विल बी द लीस्ट। यस मैम। इसमें मिनिमम ब्रांचिंग है, नो ब्रांचिंग इनफैक्ट। नो ब्रांचिंग मतलब प्लस आई इफेक्ट कम होगा, और प्लस आई कम होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? यस मैम। मैम अपने किया ना उसमें मैंने फिफ्थ आपने लिखा ना, तभी मैंने फिफ्थ देखा नहीं था, इसलिए डबल लगा ना, इसलिए मैंने ऐसे ही बोल दिया। फिर मैंने क्या? चेक किया तो वो जो एग्जांपल आपने बोला ना कि रॉन्ग था, उसमें कौन सा एग्जाम्पल? वो पीछे किया था ना हम लोग ने अभी, वो ये जो वाला? 1 2 5। हाँ मैम, तभी हाँ, मैंने खाली इतना देखा ना, तो मैंने खाली ऐसा ही बोल दिया। फिर मैंने चेक किया ना तो सच्ची में नहीं रॉन्ग नहीं हो नहीं रहा नहीं, मेरा भी वो ध्यान ये कार्बन से चला गया था, ये कार्बन पे क्लोरीन था ना, आई फॉरगॉट दैट। मेरा भी ध्यान हट गया था। ओके, दिस एग्जांपल आई हैव डन इट सो मेनी टाइम्स, एवरी ईयर आई डू। पता नहीं आज ऐसे कैसे हो गया। ठीक था। है, हाँ ठीक है, ये हो गया, ये लिख लिया। No. यस। इज इट डन? Yes. Yes, ma'am. Fluoroacetic acid, fluoroacetic acid, bromoacetic acid. Highest is fluoro, bromo, and No, okay, NO2 will be greatest, then chloro, then fluoro, then bromo. yes. And what is the reason? Highest electronegativity is of NO2. माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा NO2 का है इन सब में से, करेक्ट? इसलिए वो सबसे पहले आएगा, डी सबसे पहले आएगा, तो डी के बाद बी, और उसके बाद ए, और उसके बाद दिस सी। ऑर्डर इज बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट व्हिच आई गेव यू ऑल। फाइन? यस मैम। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैम ये तो पूरा कितना बड़ा है, कितना मतलब कितने हो गए, कितने 30 20 पूरा याद रखने का है ना? हाँ तो माइनस याद तो रखना। ऐसे अभी और भी ऑर्डर्स आएंगे जीओसी में, ओके मैम, मतलब इन खाली शॉर्ट वही एक खाली। ऑर्डर नहीं है, खाली इंडक्टिव का वो ऑर्डर है, वैसे ही रेजोनेंस का एक ऑर्डर आएगा, समझा? हाँ मैम, खाली मतलब सम यानी कि सम इस पे ही बेस्ड हो गए ना पूरे। बेसिकली हम वो ऑर्डर अरेंज करके देते हैं ताकि इट बिकम्स इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, टू गेट द आंसर्स। फाइन? ओके। मैम दिमाग का 1 GB स्टोरेज तो ऑर्गेनिक ही ले लेगा। क्या? दिमाग का 1 GB स्टोरेज तो ऑर्गेनिक ही ले लेगा। नहीं मतलब याद अभी स्टार्टिंग में आपको डिफिकल्टी होगा, बाद में तो ऐसे सामने दिखेगा तो आपको याद मतलब हो ही जाता है, बिकॉज जीओसी आई वांट टू यूज इन every chapter which I want to do now, henceforth GOC will be used. जैसे अभी ABCD आप पढ़ते हो, do you have to revise all over again and again ABCD? नो मैम। वो एक बार ऑर्डर याद हो गया तो it is there fixed in your mind ना? हाँ मैम। And why does it happen? Because if you say it regularly, बचपन में regularly बोला था ना वो,
तो फिक्स हो गया ना वो माइंड में ABCD, am I right? तो ये Yes. GOC का भी I'll be using it n number of times. That n is going to be very, very large. So it will be like ABCD for you, these orders. समझा? हाँ So it is मैम. not going to use much of your brain. Don't worry. Okay. Now this is propanoic acid, propenoic acid and propinoic acid. इनमें से stronger acid कौन सा होगा? थ्री है क्या मैम? क्या बोला आपने वापस? Strongest is 1. Why is one the strongest? These carbon atoms are what hybridized. Both are sp3. हाँ 180. These are what hybridized. sp2, And और these, sp. SP खाली. more the percentage of S character, more is the electronegativity of the atom. फर्स्ट वाला Do पहला you know है. that? Yes, ma'am. Higher the percentage of S character, higher is the electronegativity. So out of these three types of carbon atoms, can I say these are the least electronegative carbon because these have minimum percentage of S character. Yes मैम. तो अगर इसका minimum electronegativity है, so it will donate maximum ना? हाँ. तो maximum plus I effect इसमें आएगा और minimum plus I किसमें आएगा? थर्ड वाले में. हाँ. Propanoic acid. So now give me the answer. 3 to 1. Yes. So reason also you keep on writing what I'm saying. You should know the reason also. More the percentage of S character, more is the electronegativity of the atom. मिस एक मिनट रुको तो. मिस अभी बोलो ना. मोर द परसेंट. More the percentage of S character of the hybrid orbital. More the percentage of S character of the hybrid orbital. Higher would be the electronegativity of the atom. Higher will be the Electronegativity of the atom. electronegative. Okay मैम. Yes, you can say acidic strength is directly proportional to electronegativity. Fine. Now this is oxalic acid. This is malonic acid. ये common names है उसके. IUPAC names तो आपको पता होंगे. This is ethane dioic acid, propane dioic acid. इनमें से stronger acid कौन सा होगा? Oxalic. Oxalic acid. हाँ, reason? Carbon अपने maximum electrons oxide. Can I say अगर ये H plus में देख रही हूँ, ये H plus निकलना है. ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई होता है इसका. एम आई राइट? हाँ मैम इसलिए यहाँ पे वो ग्रुप दूर हो गया माइनस आई वाला. एक कार्बन और बीच में आ गया ना. ये कार्बन क्या हाइब्रिडाइज हो गया? sp3 है ना. हाँ मैम इसलिए वो उसका ज्यादा होगा. sp3 हाइब्रिड कार्बन तो देगा ना इलेक्ट्रॉन्स. दोनों तरफ देगा पर देगा ना. यस मैम. हाँ, तो इसमें जो इंडक्टिव इफेक्ट आ रहा है, प्लस आई इफेक्ट आ रहा है, वो इसमें नहीं है. हाँ मैम नहीं है इसमें. मैम ये भी तो sp3 hybridized ही होगा ना. ये sp2 है.
पाई बॉन्ड आ गया तो sp2 हो गया ना, Oh, yes, ma'am. ठीक है. So oxalic acid will be a stronger acid than malonic acid because in malonic acid there is a sp2 hybrid carbon, sorry sp3 hybrid carbon which will show plus I effect, और इसका plus I effect आ गया तो acidic strength कम हो जाता है. Did you understand this? Are you all understanding or no? मैम Yes, थोड़ा ma'am. वापस बोलो तो एक बार. ये मैंने ऑक्सैलिक एसिड और मेलोनिक एसिड में यही एक कार्बन का डिफरेंस है. हाँ इसमें एक कार्बन एक्स्ट्रा है ना ये, हाँ मैम. तो ये कार्बन का इफेक्ट क्या आएगा बस उस पे देखना है. ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 तो उसका प्लस आई इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा, आएगा और प्लस आई इफेक्ट आ गया तो क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कम हो जाएगा. एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा. एम आई राइट? हाँ मैम वही एसिडिक दैट स्ट्रेंथ. मेक्स ऑक्सैलिक एसिड अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन मेलोनिक एसिड. Till here, any doubts? नो मैम. No, ma'am. All these are going to show plus I, but then the plus I effect of a sp3 hybrid carbon is going to be more than sp2, and sp2 hybrid carbon will have more plus I than sp, because these are more electronegative, so their ability to donate will become less. Okay. Okay, carbon atom is bonded to a carbon having oxygen, na? Oxygen is more electronegative than carbon atoms. Do you agree? So the carbon atoms have to show plus I, but the plus I shown by a sp hybrid carbon will be minimum, and the plus I effect of an sp3 hybrid carbon atom will be maximum. Is this clear now? Any questions, any doubts? नो मैम. Okay, did you all finish this? यस मैम. Okay. Now an acid, after it gives H plus ions. अब जैसे इसने H plus ions दे दिया, उसके बाद ये जो बचा हुआ है, that is called as a conjugate base. An acid loses H plus ions and whatever part remains back is called as the conjugate base. So acetic acid का conjugate base होता है acetate ion. Chloroacetic acid का conjugate base is chloroacetate ion. Dichloroacetic acid का conjugate base is dichloroacetate ion. Trichloroacetic acid का conjugate base is trichloroacetate ion. So from any substance, when you remove H plus ions, whatever you get is called as its conjugate base. जैसे HCl, HCl का conjugate base क्या होगा? Chloride. HCl का conjugate base Cl minus है, correct? हाँ. What is the conjugate base of H2SO4? सल्फर. HSO4 minus. एक ही H plus निकालना है आपको. हाँ हाँ. Conjugate base of H2SO4 is HSO4 minus. HSO4 minus का conjugate base क्या है? SO4 Sulfate 2 minus. Sulfate 2 minus. Sulfate ion. What is the conjugate base of? Sorry. Any doubt till here? नो मैम. What will be the It- conjugate base of H3PO4? H2PO4 minus. H2PO4 minus. Conjugate base of H2PO4 minus. HPO4 2 minus. Conjugate base of HPO4 2 minus.
Phosphate 3 minus. Conjugate base of water. Hydroxide ion. OH minus होगा ना, H plus निकालना है ना. हाँ मैम. Conjugate base of H3O plus. H2O minus. H2O. H2O. That's all. Plus charge already है ना, वो निकाल रहे हो आप. हाँ प्लस है, मैंने वो देखा नहीं. What is the conjugate base of NH4 plus? NH3. Conjugate base of NH3? NH2 minus. Minus. Yes. Are you all understanding? Yes. Yes. ma'am. Conjugate base of acetic acid? CH3COO minus. H minus. So I think you all have understood what is conjugate base. Yes? हाँ, ma'am. Now, why is this called as a base? Why are these called as base? Because according to Bronsted theory of acid and bases, They are proton acceptors. That's why yes, they acid is are something base. which can donate protons, and base is a substance which can accept protons. Can Cl minus accept H plus? Yes. It can accept a proton to form HCl. Am I right? हाँ हाँ. HSO4 minus भी H plus लेके सल्फ्यूरिक एसिड बना सकता है. Am I right? Yes ma'am. OH minus भी H plus लेके water बना सकता है. Am I right? That is why these are known as bases. समझा कि नहीं समझा? Because they can accept proton. Did you understand what I said? Yes, हाँ मैम. ma'am. A strong acid has a weak conjugate base, and a weak acid has a strong conjugate base. Why am I saying this? Sorry. मैम क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा तो वो ज्यादा डोनेट करेगा H हाइड्रोजन, तो हाँ. अपना कॉन्जुगेट बेस जो होगा वो वीक हो जाएगा, और जो हाँ. वीक एसिड होगा वो कम डोनेट करेगा, इसलिए कॉन्जुगेट बेस ज्यादा हो जाएगा. मतलब अच्छा, जैसे HCl. Can I say HCl is a strong acid? Yes. Means it can give H plus ions easily. Do you agree? हाँ मैम. Yes. The reason is because Cl minus का H plus की तरफ attraction होता ही नहीं है. Cl minus जल्दी H plus को accept करता ही नहीं है. वो weak base है, H plus को accept करता नहीं है, इसीलिए HCl strong acid है. Did you understand what I said? Yes The ma'am. affinity of H plus ions for the affinity for H plus ions by Cl minus is very, very small. It doesn't like to take H plus ions. And if it doesn't like to take H plus ions, that is why HCl is a strong acid. Do you हाँ. agree? Yes ma'am. HCl strong है पर Cl conjugate base weak हो जाएगा. हाँ, तो जिसका conjugate base weak होता है उसका acid strong होता है, और जिसका conjugate base strong होता है, strong base मतलब उसका affinity for H plus is very strong. जैसे OH minus जल्दी H plus छोड़ता नहीं है, H plus को जल्दी ले लेता है वो. That is why water is a very weak acid. समझा कि नहीं समझा? हाँ This is मैम. a strong base. OH minus is a strong base, means its proton accepting power is very high, and that is why water is a weak acid. Have you all understood what I have said? Isn't water amphoteric? It is amphoteric, but see, acidic and basic strength is based on the this is relative. Relative matlab, water is a very weak acid if I add HCl to it. Am I right? It will in fact act as a base. But if I add ammonia add कर लिया तो water will act as an acid, ना? Acid. मतलब ये दोनों अगर का मैंने अमोनिया ऐड कर दिया वाटर में, तो वाटर अमोनिया के साथ क्या क्या बनाता है? Ammonium. NH4OH बनता है ना. तो इसमें वाटर क्या कर रहा है? It acts as an acid. It gives H plus to this, forming ammonium ion. Am I right? Yes ma'am. So acidic and basic strength are relative. Relative means it is only in comparison you can say कि ये weak acid है, वो stronger acid है, and so on.
यस मैम, आपने लिखा ही है ना, ये एसिड में भी लिखा और बेस में भी लिखा है, मतलब कॉन्जुगेट बेस में ठीक है, H2। समझा? हाँ मैम, अभी लिख लेते, एक मिनट। देखो, इनफैक्ट water can accept H plus to give you this. It can donate H plus to give you OH minus, correct? अगर water ने H plus accept कर दिया तो you'll get hydronium ion. Am I right? हाँ और मैम, water ने अगर H plus donate कर लिया तो you'll get hydroxide ion. अब it depends कि water में आप क्या ऐड कर रहे हो। कुछ अमोनिया जैसे ऐड कर लिया तो देखो, अभी मैं समझा रही हूँ एक बार फिर से। वाटर में मैंने अगर अमोनिया ऐड कर दिया तो क्या Ammonium hydroxide. बनेगा? OH। NH4 प्लस बनेगा। अगर हाँ, वाटर में मैंने HCl ऐड कर दिया तो क्या बनेगा? हाइड्रोनियम आयन बनेगा। एम आई राइट? यस मैम। इसमें ये रिएक्शन में वाटर एक्सेप्ट H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है। डू यू एग्री? Yes. So here it is acting as what? It is acting as a base. Base. But here it is acting as an acid in this reaction. Why it is acting as an acid? अमोनियम से Because here it is giving H plus ions. हाँ मैम, Did you understand this? यस मैम, समझा। तो ये रिलेटिव होता है। रिलेटिव मतलब क्या आपने ऐड किया है उस पर डिपेंड होता है। हाँ, Is that understood? यस मैम। Yes, ma'am. Okay. Now I said that a strong conjugate base has a weaker acid, or I can say weak acid has a strong conjugate base and a strong acid has a weak conjugate base. तो अब ये जो मैंने आपको दिए थे एसिड्स दिए थे, उनके कॉन्जुगेट बेसेस ये हैं। इन सब में से स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस कौन सा है इन चारों में से? First, ये वाला, number ये वाला, one. ये वाला या ये वाला? Yes, can I say this is the strongest conjugate base? हाँ मैम। जितना And high this will be acidic the strength, weakest उतना ही conjugate weak base. acid conjugate base. Sorry? जितना higher the strength of acid, उतना ही weak उसका conjugate base. This is the weakest acid, no? So this will be the strongest conjugate base, no? जिसका Ka ज्यादा होगा, जिस एसिड का Ka ज्यादा होगा, उसका conjugate base जो होगा वो क्या होगा? अरे नहीं, वो कम होगा, वीक। अरे कुछ, are you getting confused? नहीं, सॉरी, गलत बोला। मतलब जिसका Ka ज्यादा होगा उसका कॉन्जुगेट बेस कम होगा, और जिस Yes, okay. अब जैसे ये एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड वीक एसिड है, एम आई राइट? हाँ Yes, मैम, ma'am. वीक एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रांग होगा ना? यस मैम। मैम मैं डिक्रीजिंग वीक एसिड का Ka छोटा होता है, वीक एसिड का Ka छोटा होता है या नहीं? Yes, ma'am. तो उसका बेस स्ट्रांग होता है ना? स्ट्रॉन्ग होता है, कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होता है। अब बेस का स्ट्रेंथ हम Kb में मेजर करते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ हाउ डू वी मेजर? Kb। Stronger the base, more will be the Kb. In other words, Kb is directly proportional to what? Basic strength. ये समझा है मैंने क्या कहा? हाँ मैम, समझा। Kb is directly proportional to basic strength. Ka is directly proportional to acidic strength. जिसका Ka ज्यादा उसका Kb कम होगा. Do you agree? यस मैम। Yes, अब ma'am. जैसे इसका Ka कम है पर इसका Kb वैल्यू ज्यादा होगा ना कॉन्जुगेट बेस का। हाँ मैम, अभी जो फोर्थ को। एसिड का Ka कम होता है उसके कॉन्जुगेट बेस का Kb ज्यादा होता है। इज दैट क्लियर नाउ? हाँ मैम, वो तो समझ गया अभी। Are you understanding or getting confused? नहीं मैम, मैं तो मतलब बोल नहीं पाया बराबर से, बाकी मैं What तो about the समझ। others? I'm asking all of you. Yes, ma'am. Understood. अंडरस्टूड। Okay. So amongst these four, could you tell me which is having the highest Kb? फर्स्ट वन। हाँ, and lowest Kb फोर्थ। इसका होगा. Is that clear? हाँ मैम। कुछ भी डाउट है यहाँ तक? नो मैम। Anything you want me to re-explain? नो मैम। Okay. So I think Bronsted acid you all are clear through. Then I have to start with the basic strength of a Lewis base. I don't think I'll be starting it today. I don't want you to get confused.
Yes, you can say PK is directly proportional to KB. Very good. Yes. KB and PK are directly related. Lewis base ka I will be doing it in the next class. Anything else apart from this you want to ask me? No, ma'am. आज का लेक्चर समझ में आया है? हाँ मैम. I want you to try the exercise 1 of GOC as your homework. Okay? Yes, ma'am. IUPAC कंप्लीट करना है और एक्सरसाइज 1 भी ट्राई करना. जितने भी क्वेश्चंस आए इट इज फाइन. ओके. एक्सरसाइज 1 इज बेस्ड ऑन इंडक्टिव ओनली. एसिडिक Okay. स्ट्रेंथ पे ही है वो. तो आई थिंक पूरा- most of the questions you will be able to solve. ओके मैम, हो जाएगा. अभी हो जाएगा थोड़ी देर में. ठीक है. सो आई एम एंडिंग द क्लास टुडे. कुछ नहीं समझा है अगर तो ही रिकॉर्डिंग देखना, वरना रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत नहीं है. यू आर नॉट सपोज टू वेस्ट योर टाइम ऑन सीइंग द रिकॉर्डिंग्स. फाइन. हाँ मैम. चलो. बाय ऑल ऑफ यू. आई विल सी यू ऑल टुमारो. बाय Thank you, मैम. ma'am. Yes. बाय मैम. Okay.